the concept of law of diminishing marginal utility. What we mean by that? Before understanding the law of diminishing marginal utility, let us discuss about some of the assumption. हम ये लॉ को समझने से पहले इसके कुछ मान्यताएं, इसके कुछ assumptions को समझेंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो पहला एजम्पशन है वो ये है कि जब हम इस पूरे लॉ के बारे में देखेंगे उसमें क्या होगा, घटते हुए सीमांत उपयोगिता. इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कंज्यूमर है वो जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है दैट विल बी अ स्टैंडर्ड यूनिट. वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है. दैट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट that a consumer is consuming tea. So whenever we are talking about the tea, हमारे जहन में क्या आता है कि ये 1 cup of tea होगा. It will be a cup of tea. It won't be a spoon of tea. अगर हमने टी को स्पून में मेजर करना शुरू किया then this law would not be applicable. The second assumption for the law of diminishing is the consumption of the commodity is in a continuous time. ये कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि 1 cup of tea आई एम टेकिंग इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट कप ऑफ टी आई एम टेकिंग इन द आफ्टरनून एंड द नेक्स्ट कप ऑफ टी आई एम टेकिंग इन द इवनिंग. सो इतना टाइम स्पैन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कंटिन्यूसली. व्हेन आई एम कंज्यूमिंग चपाती, उसको हम कंटिन्यूस में जब हम कंज्यूम करते हैं that will be considered. So these are the two assumptions. The first one is the unit should be a standard unit, and the second assumption is it is consumed continuously. Law of diminishing utility. After the assumption, now let us discuss about the concept of law of diminishing utility, which is known as घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम. घटते हुए सीमांत उपयोगिता में देखिए हम लोग इसको समझते हैं. सबसे पहले हम ये सब एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसका डायग्राम, क्योंकि मैंने मेरे पहले वाले कंसेप्ट में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम नहीं समझा था. सो हियर वी विल कंप्लीट ऑल दोज थिंग्स. लेट अस स्टार्ट. Law of diminishing marginal utility states that when the consumer is consuming an additional unit of a commodity, the marginal utility is keep on diminishing. जैसे जैसे एक उपभोक्ता एक के बाद दूसरी इकाई को उपभोग करेगा, उसकी जो उपयोगिता है वो कम होती जाएगी. It is with every additional unit, the marginal utility must diminish, and it is very natural to be happen. This is a natural process. ठीक है, इसको और एक बार हम लोग न्यूमेरिकली समझते हैं. Suppose here we are talking about burger. Now, the consumer is willing to consume the burger. जैसे मेरा बेटा है, वो हम लेके गए उसको मैकडी एंड उसने बर्गर खाने की इच्छा की. सो व्हाट हैपेंड व्हेन ही कंज्यूम्ड द फर्स्ट बर्गर, ही डिराइव्स द मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज 12. उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली और टोटल यूटिलिटी आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट बर्गर इज 12. नाउ he want another burger. तो हमने as our assumption is that it is a continuous assumption में हमने लिया है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस होगा. नाउ व्हेन ही इज कंज्यूमिंग द सेकंड बर्गर, ऑफ कोर्स उसका थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हो चुका था. सो इन द सेकंड बर्गर ही डिराइव्स द सेटिस्फैक्शन दैट इज द 6. When he is consuming the third burger, from the third burger he is deriving the marginal utility 4. फोर्थ बर्गर में अब उसका मन भर चुका था. He got the second 2 units of marginal utility. Now, if he consumes the fifth one, तो उसने मुझे बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा. I got no satisfaction. And then the sixth burger, if he consumes, उसने बोला, हालांकि उसने कंज्यूम किया नहीं, उसने बोला if I consume, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा. That means the negative utility. So this is what the law of diminishing marginal utility states.
Law of diminishing marginal utility states that when the consumer proceeds to consume the successive unit of a commodity, यहाँ पे जब एक के बाद दूसरा बर्गर कंज्यूम किया जा रहा था तब उससे मिलने वाला marginal utility is keep on diminishing. If we talk about the total utility, हम देखेंगे कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता गया टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन घटते हुए दर में एट अ डिमिनिशिंग रेट. पहले 12 एंड देन 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 2. See how the rate is diminishing. That means marginal utility is diminishing. After a point it reaches to the zero, and beyond that if the consumer is consuming, he or she will get negative marginal utility. Now let us understand the concept with the help of a diagram. See, when a consumer consumes, यहाँ पे देखिए ये marginal utility curve है जो downward falling है. जैसे जैसे हमारे यूनिट कंज्यूम हो रहा है, जब उसने पहला यूनिट कंज्यूम किया, he derives the marginal utility 12. उसको 12 marginal utility मिली. When he consumes the second, he got the marginal utility 6. उसको 6 की marginal utility मिली. कम हो रहा है, यहाँ पे था, अब उसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड आ रहा है. When he consumed the third, उसको marginal utility 4 utils के बराबर मिली. And then he consumes the fourth, and he got the marginal utility equal to 2. With the consumption of 5, he got the marginal utility of 0, and beyond that if he consumes, he has to derive the negative marginal utility, that is minus 2. And here we see that the total utility is increasing but at a diminishing rate, and after a certain point, see this is the constant, उसके बाद अगर वो 5th से 6th यूनिट आता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी जो है कर्व डाउनवर्ड फॉलिंग होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द law of diminishing marginal utility. Again I am repeating what we mean by the law of diminishing marginal utility. Means when a consumer consumes the successive unit of a commodity, the utility, the marginal utility which he derives is keep on diminishing, and the total utility increases but at a diminishing rate. After reaching to certain point it remain constant. See, with the 4th and the 5th unit, the total utility remain constant, and beyond that if he moves, there will be a downfall in the total utility, that is the 24 to 22. This is all about the law of diminishing marginal utility. Next we will see the relationship between the same thing, the relationship between the total utility and the marginal utility. The next topic is relationship between the total utility and marginal utility. हम already कर चुके हैं कि how to find it out. The total utility is the sum total of marginal utility, and the marginal utility is the additional utility derived by the consumer after consuming an additional unit of a commodity. Now we are going to read about the relationship between the total utility and marginal utility. First we will try to understand with the help of a schedule. See, initially when the consumer is consuming first unit, the total utility is 12, the marginal utility is 12. Now as the consumer proceeding successive, then the marginal utilities keep on diminishing. We have already learned that it is keep on diminishing because of law of diminishing marginal utility. See, till the marginal utility is diminishing, 12, 6, 4, 2, that means till here the total utility is increasing, and it is, or the vice versa if we is saying that till the total utility is increasing, the marginal utility is diminishing but positive. यहाँ पे एक चीज आप लैंग्वेज में ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन घटते हुए दर पे एट अ डिमिनिशिंग रेट.
So what is the first relation? First relation is when the total utility is increasing at a diminishing rate, the marginal utility is diminishing but it remains positive. What is the second relation? The second relation is when the marginal utility is 0, the total utility is at its maximum point, that is 24. Or when the total utility is maximum, the marginal utility is 0. Then when the total utility falls, the marginal utility will become negative. This is the third relation. जब total utility घटती है तो marginal utility जो है वो negative हो जाती है. हम इसको हमारे डायग्राम से भी समझते हैं. हम देखेंगे कि 1 से लेके 4th यूनिट तक मार्जिनल यूटिलिटी घट रही थी लेकिन पॉजिटिव थी जब तक कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड दिस वे what happened with the increase in the, यहाँ पे 4th यूनिट तक क्या हो रहा है, जब तक हमारा total utility increase हो रहा है, our marginal utility is diminishing but it remain positive. At the 5th unit, the marginal utility is 0. See, at the 5th unit, the marginal utility is mu is 0 and total utility is its maximum point. How we can find it out? If we draw a tangent line, हम एक अगर tangent line draw करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 24 था. So in this tangent line, this is the maximum position. So at the end of the maximum position, the marginal utility is 0. When the total utility is diminishing, the marginal utility becomes negative. So we have 3 relations. First, what is the first relation? When the total utility increases, marginal utility diminishes but it is positive. Which is the second relation? When the total utility is maximum, the marginal utility is 0. The third relation, when total utility falls, the marginal utility will become negative. This is all about the relationship between the total utility and the marginal utility.